तो गाइस आ गए हैं हम मैकेनिकल के माहौल में जहाँ मशीन का हर टूल बोलता है। ये डिपार्टमेंट है फुल प्रैक्टिकल, फुल पावरफुल। यहाँ आपको मिलते हैं हाई टेक इंटरेक्टिव बोर्ड्स, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लाइव केस स्टडीज के साथ पढ़ाई करने अंदाज। तो ये है कैड कैन ज़ूम, जहाँ ऑटो कैड और सॉलिड वर्क्स के 3D डिजाइन सिखाए जाते हैं जो इंडस्ट्री के प्रोटोटाइप्स में सीधा दिखाई देते हैं। तो ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हीट ट्रांसफर रिसर्च लैब, जहाँ इंजन्स, टर्बाइंस और हीट एक्सचेंजर्स का खेल सिखाया जाता है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम को समझ सकें। तो अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैब की। तो ये है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैब, जहाँ गियर बॉक्स और पावर स्टीयरिंग का मैकेनिक्स सीखा जाता है, लुब्रिकेशन से इंजन्स को स्मूथ बनाया जाता है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स का प्रिसीशन देखा जाता है। तो अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग लैब की, जहाँ आइडियाज डायरेक्टली मशीन से शेप लेते हैं। डिजाइन से लेके प्रोटोटाइप पर सब कुछ होता है या रियल टाइम। So sir, what is this lab all about and how it is getting benefited for our students? Okay, very good question, Rekha. Before to answer your question, I would like to say a few words about this construction of this lab. This lab is called as the three-dimensional lab, that is 3D printing lab. This lab has been supported by CAD Technologies Indore and we strictly follow the National Board of Accreditation guidelines. According to that, all industry came to us and they have supported this lab to us to make educate for our students in the 3D printing of various materials. And your second question was how it is getting benefited for our students. I would like to say that our students have gotten another area to learn apart from mechanical engineering, that is called as 3D printing lab, in which our two senior students by name Aditya and Ravindra Baghel both have exhaustively worked on this lab, and not only they have learned how to print the 3D products, apart from that, they have learned to make the software and develop the products, simple products just like toys, mechanical equipments, keychains, etc. for our students. And this has given lot of exposure for our students to know about the 3D printing lab, which is at Mechanical Engineering Department. Just sir, what is this lab all about and how it is unique? ओके बेटा, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब है और इसमें हम लोग व्हीकल का मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन पार्ट, बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक वायरिंग हार्नेस, ये सारा हम लोग लर्न करते हैं जो आज की करंट इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, राइट। यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड मोड पे चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट की मोमेंटम और आपका जो ड्राइव ट्रेन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसके बारे में हम लोग पूरा चीज सीखते हैं यहाँ पे। So sir, what is mechanical engineering and how it is progressing? Okay, great. It's a very basic question. Mechanical engineering is a very broad area which deals with the design, manufacturing and operation of machines and systems, in which mechanical engineering comes under a core branch, in which we have many elite branches so called as automation, mechatronics, production, thermal, design, so on and so forth. Even automobile comes under mechanical engineering. SISTec, we are exhaustively working on the ethical oriented learnings, ethical applications and trainings as well. We have recently included 5 industry supported labs in our institute in department. The one is electric research lab, second is 3D printing, third is lathe automation, fourth is we have Center of Excellence of Renault and Nissan, and fifth is CNG lab. By this way, our students are getting exposure in various areas, not only theory,
in practical as well. Thereby, having this concrete training in technical aptitude, com skill, reasoning, and theory, our students have excelled in getting the lucrative offers of the company. We have very good brands this year. Our 100% students have been placed in Mechanical Alien.